Hello friends. In the last lecture we discussed about the principle of photochemistry. There are some example. What happen when the radiation is incident on a substance, which process is carried out in a substance. We already discussed in the last lecture. But which principle is present, which law is present for the photochemistry we discussed today. First, Lambert's law, which is explained by Lambert in 1758. This law stated that the decrease in the intensity of a monochromatic light with the thickness of the absorbing medium is proportional to the intensity of incident light. मीन्स यहाँ पे जो मॉलिक्यूल जो होता है, जो सब्सटेंस होता है, जो एक आप जो एक कंटेनर लेते हो जिसमें आप वो सब्सटेंस आप रखते हो, तो उस सब्सटेंस पे कभी आप एक खांदा रेडिएशन बम्बार्डमेंट करते हो तो वो रेडिएशन और वो सब्सटेंस की थिकनेस इनमें क्या रिलेशन है, तो दोनों भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मीन दोनों भी कैसे है कि डायरेक्ट रिलेशन में है कि वो जब भी आप थिकनेस चेंज करोगे तो रेडिएशन ऑफ एब्सॉर्प्शन भी चेंज होगी। यहाँ पे I0 is the intensity of incident light, X is the thickness of the medium, I is the intensity of transmitted light. This law stated that there is a relationship between the I0 and X, incident light and thickness of the medium. And mathematically this equation can be written in that minus di upon dx is directly proportional to I. Minus sign means decrease in the intensity of incident light. I is the intensity of transmitted light, I0, okay. Minus di upon dx is equal to ki, where the proportionality constant is k. If we integrate this equation within the limit of I0, I is equal to I0 at x is equal to 0 and I is equal to I at x is equal to x, we get integration di upon I is equal to minus k integration dx. And this three equation, if we change this equation in the form of ln I upon I0 is equal to minus kl, or I is equal to I0 e raised to the power minus kl. This is the mathematical equation of Lambert's law. This equation show that intensity of beam of monochromatic radiation, decreases exponentially with increase in the thickness X of the absorbing substance. This is called as the Lambert's law. लैम्बर्ट्स लॉ ने क्या बोला है कि जब भी आप रेडिएशन, आप इंसिडेंट रेडिएशन आप कोई भी सब्सटेंस पे डालते हो तो उसका एब्सॉर्प्शन जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है जैसे जैसे आप थिकनेस बढ़ाते हो. इफ देयर इज अ स्मॉल थिकनेस, the radiation which is absorbed by this substance is less as compared to same substance which is present in a more bigger container if the thickness is increasing. This is the relationship. This is the explanation of the Lambert's law. Then this equation is again converted into 2.303 log I upon I0. ln convert किया अपन ने log में, then equation is become minus kx. Log I upon I0 is equal to k upon 2.303 into x. Log I upon I0 is equal to epsilon x. Okay. Log I0 upon I is equal to minus epsilon x. This is the change of the equation. Okay. What is the conversion of this equation? Log I upon I0 is equal to minus epsilon kx, where this negative sign, okay, there is a change in this equation. Log I upon I0 is equal to minus k upon 2.303 into x, where minus k upon 2.303, यहाँ पे आप क्या करते हो, इसमें कांस्टेंट रखते हो एप्सिलॉन, is called as extension coefficient ये कहते हैं. It is depend upon the nature of the absorbing substance and the wavelength of the incident light. यहाँ पे आप epsilon kx करते हो, therefore log I upon I0 is equal to epsilon x.
वेयर इफ वी कन्वर्ट आई जीरो को भी आप ऊपर ले तो आई नीचे हो तो यहाँ पे निगेटिव साइन जा जाती है, ये टेन इक्वेशन यहाँ पे बन जाता है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लैम्बर्ट्स लॉ, ये यहाँ पे इक्वेशन बन जाता है लैम्बर्ट्स लॉ। व्हाट अबाउट द बियर्स लॉ? बियर्स लॉ ये लैम्बर्ट्स लॉ के बाद आता है। तो in that law he say that in 1852 it is applicable for the solution and it is extended for the Lambert's law। ये Lambert's law को इसने क्या किया, थोड़ा एक्सटेंड कर दिया। जैसे Lambert's law में बोला था तो थिकनेस पे डिपेंड होता है रेडिएशन एब्सॉर्ब, तो बियर्स ने क्या किया, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हो क्या कहा या ये लॉ में कि व्हेन अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, in that statement, they say that when a beam of monochromatic light passes through the solution of the absorbing substance, the rate of decrease of intensity of the light with the thickness of the solution is directly proportional to the intensity of incident light as well as the concentration of the solution। बियर्स लॉ में क्या होता है, कभी भी आप जब भी एक लाइट रेडिएशन मोनोक्रोमेटिक लाइट रेडिएशन कभी आप इसमें सॉल्यूशन से पास करते हो तो एब्सॉर्शन जो होता है या इसकी इंटेंसिटी डिक्रीज होती है, वो डिपेंड किस पर है, तो थिकनेस ऑफ दिस एब्सॉर्बिंग मीडियम के थिकनेस पे एंड एज वेल एज द कॉन्सेंट्रेशन विच इज प्रेजेंट इन द सोल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है उसमें होता है। मीन्स दे गिव द रिलेशनशिप बिटवीन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट विद द थिकनेस एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, ये दोनों के साथ उनका रिलेशन होता है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। मैथमेटिकली ये इक्वेशन कैसे बन जाता है, माइनस डी आई अपॉन एक्स, डी आई अपॉन डी एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू सी। माइनस डी आई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू अल्फा आई सी। I is the intensity of incident light, here the thickness of the medium, alpha is the constant called as the absorption coefficient कहा जाता है उसे। or we can rearrange this one equation into di upon I, where I is convert, कभी आप डिनोमिनेटर में लिख के आता निगेटिव साइन वहाँ पे, कभी आप करते हो मुझे सिमिलर टर्म्स वन साइड लेके आते हो तो माइनस डी प्लस सॉरी डी आई अपॉन आई इज इक्वल टू माइनस अल्फा सी डी एस, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। when the second equation when we integrate this equation then we get I is equal to ix, ix is equal to 0 पे और I is equal to I, x is equal to x पे we get I upon I 0 के लिमिट में, तो मैथमेटिकली कन्वर्ट करने के बाद I is equal to I 0 e alpha Cl, this is the sixth equation is the last equation। ये इक्वेशन आप और कन्वर्ट करते जाते हो, सिक्स इक्वेशन में बोला है तो इंटेंसिटी ऑफ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन डिक्रीजेस exponentially with increase in the thickness and the concentration C of the absorbing substance. This is a mathematical expression of a Beer's law. Okay. तो ये बन जाता है थिकनेस x और कॉन्सेंट्रेशन c ऑफ द एब्सॉर्बिंग सब्सटेंस, यहाँ पे बन जाता है दिस इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द बियर्स लॉ। 2.302 ये इक्वेशन और कैसे चेंज है, 2.303 log I upon I zero is equal to माइनस अल्फा सी एक्स, ये इक्वेशन कन्वर्ट होते होते यहाँ पे आ जाता है log I जीरो अपॉन I is equal to अल्फा इप्सिलॉन सी एक्स, where this is the epsilon यहाँ पे constant जो होता है यहाँ पे this is called as absorption coefficient of the absorbing medium। It is characteristic of the solute depend upon the nature of the solvent, temperature, wavelength, and the light employed। If a concentration C is expressed in mole per dm cube and the path length x in a centimeter, then epsilon dm cube, epsilon क्या बन जाएगा टर्म से dm cube per mole per centimeter यहाँ पे हो जाता है। The quantity log I 0 upon I is called as the optional density of the absorbance of the medium. It is denoted by A. Therefore, log I 0 upon I is equal to A is equal to Cf। The transmittance P is defined as I P is equal to I upon I 0. Beer's law is applicable to a dilute solution only. This is the Beer's law statement, Beer's law mathematical equation. Okay. Then there is also some limitation of the Beer's law. Which one is the limitation?
The presence of impurities that fluorescence or absorb at the absorbing level means कभी आप substance में कभी fluorescence present है या कोई impurity present है वो भी radiation absorb करती है मीन्स उसके कारण जो solution है उसने ही total radiation absorb किया ऐसा हो नहीं सकता ये one of the drawback. Then deviation may also occur if a color solution ionize, associates, dissociate, hydrolyze, complex formation, etc. in the solution. In other words, there should exact same species at all concentration. Means कभी आप रेडिएशन आप उसमें डालते हो तो सोल्यूट क्या होता है आयनाइज हो सकता है डिसोसिएशन हो सकता है ये इसमें सेकंड ड्रॉबैक है. थर्ड ड्रॉबैक क्या है इफ द सॉल्यूशन इज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड कभी हाईली कॉन्सेंट्रेटेड पहले बोला है कि लैम्बर्ट बियर्स लॉ जो होता है तो सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ही एप्लीकेबल है. देन फोर्थ वन डेविएशन में आल्सो ऑकर इफ अ मोनोक्रोमैटिक लाइट इज नॉट यूज्ड. बराबर है. फॉर द जो ड्रॉबैक है मोनोक्रोमैटिक लाइट कभी नहीं होता है तो वहाँ पर भी ये डेविएशन में ऑल्सो ऑकर हो सकता है मीन्स जो स्ट्रेट जो लाइन मिलनी चाहिए ओरिजिनल उसमें तो ग्राफ चेंज हो सकता है. डेविएशन ऑल्सो में ऑकर इफ अ सॉल्यूशन इज टर्बिड और solely contain air bubble or any सस्पेंडेबल इम्प्यूरिटीज मीन्स वो एयर बबल बन सकता है एनी सस्पेंडेबल इम्प्यूरिटीज कभी हो सकता है टर्बाइड हो सकता है तो डेविएशन जो ग्राफ में आता है जो ओरिजिनल ग्राफ आता है इसमें ना आते हुए थोड़ा डेविएशन मिलता है. एट a high concentration the refractive index of a solution can be altered causing departure from the Beer's law. Departure of the Beer's law. Deviation may occur if the sample cell or format not can be matched. Deviation may occur if the light of light is not uniform. ये सभी ड्रॉबैक है जो ग्राफ में आपको डेविएशन मिलती है कभी इम्प्यूरिटी आती है कभी बबल आता है मीन्स जो सॉल्यूशन में कभी थोड़े से भी चेंजेस होते हैं तो डेविएशन होता है बियर्स का इतना इतना उसके बारे में जो ड्रॉबैक है लिमिटेशन है वो बियर्स लॉ है. देन एप्लीकेशन ऑफ लैम्बर्ट बियर्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है लैम्बर्ट बियर्स लॉ. To determine the unknown concentration of a compound by comparing with a solution of a known concentration using spectrophotometer. Spectrophotometer को भी आप यूज करते हो known concentration आपको दिया है तो unknown concentration आप उसका कंपाउंड का देख सकते हो इसके लिए लैम्बर्ट बियर्स लैम्बर्ट लॉ यूज होता है. To characterize a compound by drawing absorption spectra. कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख सकते हो एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा से. To measure the absorbance of a compound by using the spectrophotometer. Using spectrophotometer ये Beer Lambert law के लिए आप यूज कर सकते हो. These are the limitation and application of the Beer Lambert law. Okay. तो ये सभी लैम्बर्ट्स और बियर्स लॉ के बारे में डिस्कशन हो गया. देन वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट लॉ ग्रोथ ड्रॉपर लॉ. ये भी एक दो एक लॉ है जो आपको फोटोकेमिस्ट्री में पढ़ना पड़ता है. दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री एंड इज आल्सो कॉल्ड एज द लॉ ऑफ photochemical activation. This law was first initiated by Groth in 1870 and Dropper in 1841 is termed as the Groth-Dropper law. According to the Groth-Dropper law, only that light which is absorbed by the system can bring about the photochemical change. जो दोनों ने कहा है कि जो रेडिएशन वो सब्सटेंस एब्सॉर्ब करता है वही फोटोकेमिकल चेंज उस सब्सटेंस में करता है. तो ये इनका स्टेटमेंट है. द नेक्स्ट है स्टार्क आइंस्टाइन लॉ. दिस लॉ initiated by Stark in 1908 and Einstein in 1912 applied the concept of quantum of energy to a photochemical reaction of a molecule. This is also known as the second law of photochemistry. According to this law, in a primary photochemical reaction, each
molecule of a reacting substance absorb one quantum of radiation which lead to a photochemical change. Yes, एक स्टार कांस्टेंट लॉ का स्टेटमेंट है. ओके, suppose suppose here the mathematical, suppose mu is the frequency of radiation absorbed when the corresponding quantum of energy absorbed per molecule will be h nu. The energy is E absorbed by each molecule in a photochemical process given by E is equal to h nu. The energy absorbed per mole is given by E is equal to m h nu per mole. यहाँ पे convert हुआ और E is equal to n h nu is c upon lambda यहाँ पर because mu is equal to c upon lambda. Where is the energy of Einstein? N is the Avogadro's number, h is the Planck constant, c is the velocity of light, and lambda is the wavelength of light. If it is evident that the numerical value of energy E varies inversely as the wavelength of the light absorbed. The shorter the wavelength, greater the light absorbed. Here, this is the E and lambda. Means these are inversely proportional. Therefore, this statement is given here. It says that the shorter the wavelength, greater is the energy absorbed. Okay. हो गया स्टार कांस्टेंट लॉ. बाद में देखेंगे क्वांटम इन. द इफिशियंसी ऑफ अ फोटोकेमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ क्वांटम इन. क्वांटम इन मीन्स आप क्वांटम इन किस पे होता है, तो इफिशियंसी फोटोकेमिकल रिएक्शन की जितनी इफिशियंसी उस पर डिपेंड होता है क्वांटम इन. इट कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल रिएक्टिंग पर क्वांटम energy absorbed or number of mole reacting per Einstein of energy absorbed is denoted by phi. So that phi quantum means phi, number of molecules reacting in a given time upon number of quantum of a light absorbed in the same time. जो सेम टाइम में जितना मॉलिक्यूल रिएक्ट होते हैं, कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट होते हैं, तो कितना क्वांटा उसकी नंबर ऑफ क्वांटा रेडिएशन वो लाइट एब्सॉर्ब करता है वो मॉलिक्यूल. Yeah, phi is equal to number of mole reacting in a given time upon number of Einstein of a light absorbed in the same time. This is about the quantum field. Experimental determination of quantum field. Experimental determination. Experimental use से आप find out कर सकते हैं. In order to find out the quantum field of a photochemical reaction, two type of determination are needed. There are degrees. These are described as follows. Okay. First, determination of number of moles reacted, and second, determination of number of Einstein absorbed. ये दो तरीके से आप यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे होता है तो मॉलिक्यूल एब्सॉर्ब होता है. तो यहाँ पे पहले बताया कि दो तरीके से क्वांटम रील डिटरमाइन करता है. पहले तो है डिटरमिनेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड एंड सेकंड डिटरमिनेशन ऑफ नंबर ऑफ आइंस्टाइन एब्सॉर्ब. तो मोल्स नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड पहला जो है तो वो कैसे, इट कैन बी डिटरमाइंड बाय एनालिटिकल मेथड यूज इन अ केमिकल काइनेटिक्स. Knowing concentration of reactants before and after the reaction, number of moles can be calculated. Second, for this purpose, an arrangement such as shown in the figure 1 is required. It is considered consist of a figure. यहाँ पर ये है. तो ये सेकंड टाइप से आप देखेंगे अगले लेक्चर में किस तरीके से वो मॉलिक्यूल्स आपको आप क्वांटम में डिटरमाइन करते हैं. तो नेक्स्ट लेक्चर अगले 2-3 दिन में मैं आपको दे दूँगा.